Hello everyone, welcome to another theoretical session, and this time in this particular session we are going to discuss about the concept of formal charge. Okay, it is being denoted as QF. Now I am trying to make you understand the concept of formal charge in the most easiest way. Okay, I'm not going into the technicalities and the technical definitions and all that stuff. Here I just want to make you understand, okay, what actually formal charge is all about. Okay, so the first point that you need to remember, and that is that whenever I talk about a constituent species with respect to a molecule or a molecular ion, okay, it may or may not have a charge. So formal charge is related to something to that. So how we go about is the charge residing on the constituent species. I am using, my dear friends, the simplest of all the languages. The charge residing on the constituent species of a molecule or a molecular ion. You know the concepts very well, the difference between the two, don't you? Molecule and molecular ion. So that is basically called as what? Formal charge. अब देखो दोस्तों, और सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज, नाउ ओवरऑल चार्ज नहीं होता उसका, तब उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, और जब ओवरऑल चार्ज होता है तो हम उसको मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे. तो जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मॉलिक्यूल का, तो ये मानता हूँ मैं कि ओवरऑल चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज जो मौजूद है वो भी न्यूट्रल हो. उनके ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Alright? It's not necessary that the constituent species of a molecule, all of which are going to be in the atomic state. It's not necessary. It may or may not have a charge. If it doesn't have a charge, alright, well and good. But if it has a charge, then please keep in mind that is the summation of the charges should be come out to zero. If it is a molecule. ओके, यानी अगर उनके ऊपर चार्ज है भी, तो जो भी चार्ज है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल मुझे क्या मिलना चाहिए? जीरो. यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट फॉर्मल चार्ज. अब मैं आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, सो दैट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बिकम्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. ऑलराइट, सो द फर्स्ट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला सेज QF is equal to Na minus of NLP minus of half into NBP. This is the formula. Okay, QF क्या होता है? फॉर्मल चार्ज. अब मैं हर एक टर्म जो इसमें इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता रहा हूं. When I talk about Na, it's the number of valence electrons. Because we talk about molecules, obviously we talk about bonding. So it's the number of valence electrons in the free state of an atom. Okay, free state of the species, जिसका हम formal charge find out कर रहे हैं. Okay, depending upon the explanation so far, I hope you are very clear that formal charge cannot be determined of the entire molecule. We are determining of what? The constituent species. Okay, यानी इंडिविजुअल स्पीशीज का फॉर्मल चार्ज होता है. तो जिस इंडिविजुअल स्पीशीज का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके फ्री स्टेट में, नॉट इन द चार्ज स्टेट, ओके, दैट इज गोइंग टू बी Na. व्हाट इज NLP? इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अ पार्ट ऑफ लोन पेयर. दोस्तों, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वन इज द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, and the other is electrons which are not involved in bonding. So the electrons which are involved in bonding, they are called as bond pair of electrons, and the electrons which are not involved, they are called as lone pair. तो यहाँ पे the number of electrons which are a part of lone pair. दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार गलती करते हैं. ओके, बहुत लोगों को लगता है इट इज नंबर ऑफ लोन पेयर. नहीं दोस्तों, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अ पार्ट ऑफ अ लोन पेयर. ओके, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा. Suppose if I say a molecule has got two lone pairs, okay, तो आप लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, because it is the number of electrons in the lone pair. तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कितना होगा? जी हाँ, 4. तो NLP मतलब ये फॉर्मूला में आप 2 नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, you will substitute as what? 4. Okay, so I hope you understood this very well.
NLP doesn't stand for the number of lone pair of electrons. It stands for the number of electrons which are a part of lone pair. Okay? Why? Next is NBP. So I hope you have understood this also. अगर एक समझ में आया तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाता है. यही तो केमिस्ट्री की खूबी है. So number of electrons a part of what? Oh yes, it's bond pair. Okay, इसमें भी ऐसा ही है. Number of bond pairs नहीं देख रहे हम लोग. Okay, कितने electrons शामिल है as a part of a bond. So that is going to be called as what? Number of electrons as a part of a bond pair, and that is going to be NBP. Alright. Now, अभी कुछ terms में और बताना चाहूँगा आपको with reference to this particular formula. Number one is why there are minus signs. Answer is simple, and that is we are talking about what? क्या बोल रहे हैं हम लोग? देखो यहाँ पे. Oh yes, you got it right. It's electrons. Okay, so that's why minus. We go into the next part, and that is why यहाँ पर we are using a term half. क्यों? इधर तो नहीं किया ना? The reason is very simple. We are finding the formal charge of a single species, isn't it? Not of the entire molecule. Okay, एक single species का हम लोग find out कर रहे हैं. तो lone pair है, तो obviously those electrons are concentrated onto that single species itself. It's not being shared with anyone. तो as it is वो number लेना है हमें. लेकिन जब आप bond pair की बात करेंगे, when I talk about electrons involved in bond, तो उसमें क्या होगा? Okay, bond is always between the two species. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स शामिल है बॉन्डिंग में, those are contributing towards two species. But here we are going to find out in terms of one species, और इसलिए उसको हाफ किया. समझ में आया आप लोगों को? ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो शामिल है बॉन्डिंग में, they are associated with two species. We are here to find out the formal charge with respect to only one species. So that means whatever the number of electrons are involved in bonding, I divided by what? 2, or in other words, I just make it as half. Okay, so this is what I wanted to explain you. और एक शॉर्टकट देता हूँ मैं आपको. Okay, how to evaluate this half NBP? एकदम सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ मैं, which is applicable in most of the cases. Exceptional cases होगा वो जाने दो, लेकिन simple covalent bonds में ये applicable है. मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ. Okay, we don't go into coordinate covalent bond and all that stuff. Okay, complexities नहीं करना है. In simple format, half NBP is actually equal to the number of bonds formed by the particular species. Particular species means you understood? Yes, the one whose formal charge is determined in the molecule or a molecular ion. ओके, जिस स्पीशीज का हम फॉर्मल चार्ज पता कर रहे हैं, वो स्पीशीज कितना बॉन्ड बना रहा है इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. Okay, because that is also very important. Okay, when I say something like, say, formal charge on oxygen is dash, that is not universal. It depends upon where oxygen is present in which particular molecule. इसलिए तो पूरा स्टेटमेंट क्या लिखना होता है, जो मैं आपको एग्जांपल्स में ऑफकोर्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा स्टेटमेंट क्या लिखने का, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज डैश. ओके, यू हैव टू बी सो स्पेसिफिक. तो यहां पर भी जिस हम लोग स्पीशीज का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बना रहा है, दैट इज इक्वल टू हाफ एनपी. ओके, एकदम सिंपल मैंने बता दिया आप लोगों को. ओके, वो बॉन्ड काउंट करो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, तो उससे आप बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, और जो बॉन्ड आपको मिला, ओके, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. Okay, that is what you get. So that is what the simplest form I'm giving you. So this is what, my dear friends, is a formula. So QF is the formal charge is equal to Na minus of NLP minus of half into NBP, and a number of valence electrons when it is in the free state. Okay, अगर मुझे ऑक्सीजन का फाइंड आउट करने का है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इन द फ्री स्टेट 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 6 आएगा. आई बात समझ में? इट्स एज सिंपल एज दैट. NLP मतलब नॉट नंबर ऑफ लोन पेयर, इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अ पार्ट ऑफ लोन पेयर. तो अगर एक लोन पेयर है तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 2. अगर 2 लोन पेयर है इन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 4. और इसका तो मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके कर दिया है. ओके, हाफ NBP मतलब सिंपल पार्ट इज यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्पीशीज whose formal charge is determined, and that number will come over here. So okay, the value substitute करो, you get the formal charge. All right, is as simple as that.
So please have a look at it, and then I'll give you some examples also. Okay, now once you have understood what exactly is formal charge, okay, उसका definition क्या है, उसका formula क्या है, अब हम लोग next important point पे जाएंगे, and that is some examples देता हूँ मैं आपको. Okay, so first of all, the example is phosphonium ion. फॉर्मूला उसका होगा PH4 विथ अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, या तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ. ओके, तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द ओवरऑल फॉस्फोनियम आयन. जैसे अमोनियम आयन होता है ना NH4+, वैसे ये क्या है, फॉस्फोनियम आयन. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड दैट इज ग्रुप नंबर 15. आई होप यू नो दिस. ओके, सो अभी पहले क्या करूंगा, मैं आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता देता हूँ. द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज दिस. ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया. ओके, अब इसमें एटम्स तो 5 है, 4 हाइड्रोजन एंड 1 phosphorus, but the elements are 2. So we go for phosphorus, atomic number of which is 15 and its valence shell configuration is 3s2 and 3p3. तो उसके पास वैलेंस शेल में इन दी एटॉमिक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5. हाइड्रोजन तो बेचारा बहुत सिंपल है, कभी कोई तकलीफ नहीं देता. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो सो इट हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल. ऑलराइट, सो वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस इन फॉस्फोनियम. फॉर्मूला तो आपको याद है. ऑलराइट, सो वी स्टार्ट विद Na. Na मतलब कितना है, 5. ओके, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. कैन यू सी एनी लोन पेज ओवर हियर? दिख रहा है कहीं पर भी? कम ऑन, यूज अ लेंस और समथिंग लाइक दैट. दिख रहा है? नो. ओके, सो NLP is 0. अब नेक्स्ट इज व्हाट, हाफ NBP माइनस ऑफ हाफ NBP माइनस. अब मैंने क्या बोला था आपको याद है हाफ NBP के बारे में? Simply count the number of bonds formed by that particular species whose formal charge you are determining. So here you go. This is the structural formula. एक फॉस्फोरस आप काउंट कर सकते हो. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बॉन्ड बना रहा है. तो जितना बॉन्ड्स बना रहा है वो नंबर यहाँ पे लिख दो. 5 - 4 is +1. क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो प्लीज यू हैव टू मेंशन वेदर इट इज प्लस और माइनस. Alright, so this is the way we find out the formal charge on phosphorus in phosphonium ion. ये मेंशन करना जरूरी है in phosphonium ion. Okay, next is hydrogen. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि in this phosphonium ion all the hydrogen atoms are equivalent. Okay, all hydrogen atoms are what? Equivalent. So therefore all the hydrogen will have the same formal charge. जो भी हो, it will be same. तो हम लोग एक ही हाइड्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज दिखा देंगे. सो दैट इज एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ द 3. सो हियर वी गो. फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज Na मतलब 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जस्ट अ सिंगल वन, 1s1. लोन पे नो वेस नहीं दिख रहा है आपको कहीं पर भी. और नेक्स्ट इज क्या मैंने बोला था, कितना बॉन्ड बना रहा है एक हाइड्रोजन इन दिस पर, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1. दैट्स इट. 4 हाइड्रोजन मिला के 4 बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही स्पीशीज कंसीडर करना है. तो कोई भी एक हाइड्रोजन कंसीडर करो, वो एक ही बॉन्ड बना रहा है तो वो यहाँ पे लिख दो. सो 1 - 1 is 0. अब ये दोनों का ऐड करो तो यू गेट आंसर एज व्हाट, +1. इसलिए देखो यहाँ पर द चार्ज इज +1. ऑलराइट, तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, एंड दैट इज द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल. व्हाट इज दैट सर? कंक्लूजन इज दैट द फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस इन phosphonium ion is +1. The formal charge on hydrogen in phosphonium ion is 0. So 4 into 0 is 0. So what remains is +1. So ये जो +1 charge है is actually the charge on what? Phosphorus. I'll give you one more example and that is nitrous oxide. Formula है उसका N2O. और ये मॉलिक्यूल है. Phosphonium ion जो बोला था वो molecular ion. This is a molecule. Now in this case 2 elements are there. One is nitrogen, atomic number is 7, valence shell configuration 2s2 to p3 and therefore 5 electrons in the valence shell. Oxygen is 8, उसका valence shell configuration is 2s2 into p4, so it is 6. अब उसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ. Okay, this is one of the structure. Okay, और भी resonating structures है उसके, but let us consider this as one structure. अब इसमें one thing important which I want to tell you is in this particular structure,
the two nitrogen are not equivalent. First one ion mein yaad hai, I told you all the 4 hydrogen atoms are equivalent. So we just found out the Fermi charge on one hydrogen. The same thing applicable to the remaining 3 hydrogen. It cannot be done over here. So what I do is to identify these two nitrogen, I write it down over here T and I write down over here C. NT, T matlab terminal. Okay, NC, C matlab, oh yes, you guessed it right, it's central. Okay, so terminal nitrogen and central nitrogen. Okay, so here we go now. So we start with the Fermi charge on NT. That will be equal to 5 electrons in the valence shell of the free state of nitrogen minus. Lone pair कितना दिख रहा है आपको? 2. लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? We are going to consider the electrons as a part of a lone pair. So it comes out to be 4. So 5 minus 4. Okay, minus of. Now you count the number of bonds. NT, N2O में कितना bond बना रहा है? Yes, double bond. So वो इधर लिख देने का. So it comes out to be 5 minus 4 is 1. 1 minus 2 is minus 1. Alright? So this is the charge. Next thing is QF of NC. 5 तो ऐसे ही रहेगा because they are same elements. So the valence electrons are going to be the same. 5 minus of. Can you see any lone pairs around NC? No ways. So it's 0. Minus of. कितना बॉन्ड बना रहा है NC in the entire molecule? 2 NT के साथ बना रहा है, 2 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, मतलब 4. So 5 minus 0 minus 4, the answer is very simple, it's plus 1. Okay, getting it? Next. QF of O. अब यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में it has got 6. कितना लोन पेयर दिख रहा है? 2 लोन पेयर्स. So इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? Oh yes, it's 4. Minus of. कितना बॉन्ड्स बना रहा है वो? 2. Okay, so 6 minus 4. 4 is how much? 2. 2 minus 2? Oh yes, you get it 0. अब ये सबको ऐड करो, you get the answer as 0. और इसलिए देखो आप ओवरऑल यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है. और वही मैंने आपको बताया था कि in a molecule when we say overall it doesn't have any charge, but that doesn't mean its constituent species all of which are going to be neutral. No ways. It can be, it cannot be. लेकिन अगर उसके पास चार्ज है तो याद रखिएगा the summation of the charges should be equal to what? 0. Okay, so this is an example with respect to N2O. Alright, so I hope you have understood this very well. So thank you so much for joining me for this concept of Fermi charge.